Hi everyone, this is Satyam and welcome back to my channel. So today's video is all about the tips and tricks which I want to give you such that you can become a pro at driving. So before getting into the video, I want to tell you something. Like many of you keep asking me which second-hand car is good in order to learn driving. So what I think is that all the small cars like Maruti Suzuki Alto K10 or Hyundai Ion i10 or Hyundai Santro, these cars are really good in order to learn driving, and because these are small cars and they'll quickly move through any road. It will be easier for you to handle it, to turn it, to park it, and it will be easier for you to learn on it. So you can opt for these cars while you are going for a purchase of second-hand cars. And in order to purchase the second-hand cars, you can try a platform which is known as Cars24. I've already discussed about this platform in one of my videos, because this platform is where you can sell your old cars and where you can buy the second-hand cars. And they have a really good range of second-hand cars which are very much budget-friendly. It will suit your pocket, and you can get a huge collection of second-hand cars, and from them you can choose. The entire procedure is simple and very transparent, as I discussed in my previous video. So in case any of you want to check it out, the link is in the description section. You can always check it out from there. And after learning driving on my Maruti 800, I sold it on Cars24, and I was really happy with the kind of price which I received from them. And the entire procedure was very simple. They did an inspection of the car, and after inspection they told me the market price. After the market price was told to me, I was happy with the kind of price. Therefore I handed over the car and they immediately transferred the money in my account. So this was the procedure of selling off the old cars, and similar is the procedure of buying a second hand car. So in case you guys, whoever keeps on asking me which second hand car is good for practicing driving, and if you are willing to make an investment in the second-hand car, then I would really suggest you to try this platform. It's really good, and the collection is really good. So let's quickly get into the video, and let me tell you some of the pro tips which can help you become good drivers. So how many of you think that practicing rigorously for 30 days continuously for 2 hours each day can make you an expert? How many of you think that? Well, this is true, and this is something which I did when I was learning to drive. अगर आप रोज दिन नियम से 2 घंटे लगातार 30 डेज यानी 1 मंथ प्रैक्टिस करोगे ड्राइविंग अच्छे से, जैसी टेक्निक्स होनी चाहिए वैसे, तो आप बिल्कुल एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाओगे 1 मंथ के अंदर. और ये बिल्कुल एक गारंटीड चीज है. दिस इज समथिंग विच आई कैन गारंटी ऑफ, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट, आई हैव डन इट. तो अगर आपको एक बहुत अच्छा ड्राइवर बनना है, एक्सपर्ट ड्राइवर बनना है जो कि हर सिचुएशन में गाड़ी चला सके, और दिन हो, रात हो, बारिश हो, स्लोप हो, डाउनहिल हो, कोई भी सिचुएशन हो, हेवी ट्रैफिक हो, कंजेस्टेड पार्किंग हो, कहीं पे भी वो चला सके, अगर आपको वैसा ड्राइवर बनना है तो आपको प्रैक्टिस भी वैसी ही करनी है. और ट्रस्ट मी, इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग रिगरसली फॉर 30 डेज, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो एट ड्राइविंग. दिस इज टिप नंबर 1. नंबर 2, हम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? इस चीज से कि हमारी गाड़ी से किसी को चोट ना लग जाए, या हमारी गाड़ी जाके किसी और की व्हीकल में हिट ना कर दे. उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट इफ आई गो एंड हिट समवन? ओके, so imagining all those scenarios, we get really scared of driving. So सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग से निकालनी है वो है डर. डर इस बात का कि हमसे कोई गलती हो जाएगी रोड पे और किसी को चोट लग जाएगी, किसी और की व्हीकल में हिट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गाड़ी आपके कंट्रोल में होगी. और गाड़ी आपके कंट्रोल में कैसे होगी? जब आप बिल्कुल सही टेक्निकलिटीज को प्रैक्टिस करोगे, समझोगे बातों को ध्यान से, रोड पे फोकस करोगे, तो आपसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी. सो द सेकेंड टिप इज दैट I'll tell you how to stop a car in any situation. कोई भी सिचुएशन हो, किस तरह से भी आप चला रहे हो, गाड़ी को कैसे आप रोक सकते हो. वो जो ट्रिक है रोकने की, चलाने और स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको रोकने की ट्रिक बताऊंगी. वैसे तो कई बार बता चुकी हूँ, बट फॉर टुडे
the tip number 2 is how to immediately stop the car. So let's see that. हमें जब भी कार को रोकना होगा तो ये है एक्सेलरेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच. काफी बार बता चुकी हूँ, A, B और C. तो जब भी रोकना हो और अचानक से भी कोई अगर सामने आ जाए तो इमीडिएटली ऐसे रोकते हैं. फुल क्लच, हाफ ब्रेक. गाड़ी रुक जाएगी जहां है वहीं. फिर चलना हो तो धीरे धीरे ऐसे चलेंगे. रोकना हो तो इमीडिएटली ऐसे. कोई भी गाड़ी रुक जाएगी ऐसे करने से. फुल क्लच, हाफ ब्रेक. फिर चलना हो तो हम ऐसे चलेंगे. Now the next thing, the third tip is how to smoothly start the car. So I'll show you that. So as I have discussed so many times, you have to check that whether the gear is in neutral position. You have to check whether the handbrake is off or not. This is off now. And then you have to press full clutch and you have to start the car. Right? This is the procedure. And once the car has been started, then what you have to do, since the clutch is pressed, so change the gear from the neutral to the first position and slowly release the clutch, press the accelerator and begin driving. This is the mechanism of driving. So you understood now how to start the car. I told you how to stop the car and then I told you how to start the car. The next thing is that before starting and before stopping, you have to actually check whether you are sitting in a comfortable position or not. Your seat is comfortable to you or not. Whether your legs are able to reach the 3 pedals A, B, C, and whether you have fastened your seat belt or not. You have to fasten it before driving, and after making yourself comfortable and after fastening the seat belt, you have to check a few more things in this dashboard area, and I'll show you now. Since you have to make use of these mirrors, so you have to open them. This one, you have to adjust this one such that you are able to see the vehicle which comes from behind, and you have to open this mirror also. Next thing that you have to check is this dashboard area. We'll start the car. 1. We can see that so many lights are on. Okay. And all of them should vanish once we start the car. Now you can see that all of them have vanished except for the brake light, right? Why is it on? It's on because the handbrake is on. We can see that the handbrake is on. Now this light is also gone, right? So everything is fine with my car. This we have to check before starting the car. We have to check the dashboard area for any kind of warning signs. If you want to see a detailed video on this, it's already available on my channel, on my channel's playlist. You can visit there and you can watch the video for yourself. Now the next thing that we need to check before starting the car is we should check whether the indicators are functioning properly or not. You can see I have given the left indication. I have given the right indication. So indicators are working properly. Check the headlight. Okay, it's on. It's working. Right? High beam and low beam can be checked from here. So headlights and everything is checked. This lever is working properly. Now, moving on to this lever, we need to check whether the wipers are working properly, right? So this is fine. We can also check whether there is enough water. So we'll push it forward. I know my car needed cleaning. Okay, so enough of checking this lever. Everything is fine. We'll also check whether the hazard light is functioning properly or not. We can see the indications here, so it's working. I have almost checked everything. आप ये भी देख लें कि boot space में
एक फर्स्ट एड किट, एक एक्स्ट्रा व्हील और टूल किट है या नहीं है, ये सारी चीजें आप चेक कर ले। और वेयर इज द लिवर in order to open the petrol tank or the fuel tank, and where is the lever in order to open the boot space of your car. So I'll show you that. These are the levers in order to open the fuel tank as well as the boot space of the car. When we push this upward, if I push it, the fuel tank will be open, and if I push this upward, then the boot space will be open. And in order to open the bonnet, here, like you have to look here, okay, and if I'll push it towards myself, it will open the bonnet of the car. अब कभी भी आप ड्राइव करोगे और अगर ड्राइव करते करते पेट्रोल पंप चले गए तो आपको पता है कि आपका फ्यूल टैंक कहाँ से खुलता है। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हो और वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि जो पीछे का स्पेस है, बूट स्पेस, उसको वो लोग चेक करते हैं। तो आपको ये भी आ गया कि आप बैठे बैठे बूट स्पेस को कैसे ओपन कर सकते हो। इन केस इंजन में कोई भी खराबी है, कूलेंट की कमी है या इंजन ऑयल कम हो गया है या कुछ भी, तो आप ये भी जानते हो कि बोनेट को कैसे खोलना है। तो बेसिकली द नॉलेज अबाउट योर कार इज गोइंग टू मेक यू कॉन्फिडेंट। एक्चुअली हम जिस व्हीकल को चला रहे हैं उस बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ से क्या होता है। तो आप वेल इक्विप्ड हो तो आपको वैसे भी डर नहीं लगेगा गाड़ी को कभी भी रोड पे चलाने में, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो आप हैंडल कर लोगे। सो आफ्टर दिस टिप, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट once you have learned how to start the car, how to stop the car, how to make all the adjustments, now stick to the left hand side of the road and try practicing on first gear and second gear, and then stop, and then again keep on practicing on the same gears. Try to maintain a low speed and keep on practicing. That will, strengthen your concept and will make you a good driver. आप रोड के लेफ्ट हैंड साइड स्टिक करो और वहां से आप फर्स्ट गियर सेकेंड गियर पे चलाना शुरू करो। रोको चलाओ और यही चीज को बार बार करते रहो। आपको ये करने से जो कॉन्सेप्ट है ड्राइविंग की बहुत अच्छे से आ जाएगी और आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि कार मेरे कंट्रोल में कैसे रहती है और कैसे कंट्रोल करना है बेसिकली। जब आपके कंट्रोल में चीजें आने लगेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और ये जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाओगे रोड पे। जो नेक्स्ट टिप है, जब भी आप नए चलाना सीखना शुरू करो तो पहले 2 हफ्ते में तो रिवर्स ट्राई मत करो, आप फॉरवर्ड ही चलाओ। फर्स्ट गियर सेकेंड गियर पे फॉरवर्ड चलाओ, रिवर्स करने की कोशिश भी मत करो। और रिवर्स करने का जो मैकेनिज्म है वो सेम है, जैसे हम आगे चलाते हैं वैसे ही पीछे चलाते हैं। गियर भी कैसे चेंज करना है सब कुछ सेम है। स्टार्ट किया, क्लच प्रेस किया, रिवर्स गियर लगाया, क्लच रिलीज, एक्सीलेटर प्रेस, गाड़ी पीछे की ओर जाने लगेगी। जितना एक्सीलेटर देंगे उतने स्पीड से पीछे जाएगी। तो रिवर्स मेरे ख्याल से आपको 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद ही ट्राई करना चाहिए, बट मैकेनिज्म जान लो। अगर बाय चांस आपको कहीं रिवर्स करने की जरूरत पड़ी तो वो। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम नॉलेज से वेल इक्विप्ड होते हैं हमारा डर कम हो जाता है। तो नॉलेज किस बात की? इस बात की कि जब हम ट्रैफिक में अगर चल रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, तो रोड के रूल्स हमें मालूम हो। ये मालूम हो कि 1 वे क्या है और 2 वे क्या है। अगर हम जो रास्ता 1 वे है और उसमें अगर हम रॉन्ग साइड से चले जाएं तो अगर हम पुलिस की नजर में आ गए, ट्रैफिक पुलिस की, तो चालान कटना निश्चित है। तो हमें अगर नॉलेज होगा साइंस का, ट्रैफिक रूल्स के, ट्रैफिक सिग्नल्स के और ट्रैफिक साइंस के, तो ऐसा चांसेस बहुत कम है कि हमसे कोई गलती हो रोड पे। तो आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस। और जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप जब भी चलें, जब भी ड्राइव करने या प्रैक्टिस करने ही क्यों नहीं, बगल के ही रोड पे क्यों ना जा रहे हो, बट आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी पेपर्स, इंश्योरेंस पेपर्स और आरसी बुक, ये 4 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। जानबूझ करके अपने आप को ट्रबल में डालने की जरूरत नहीं है।
चेकिंग किसी भी टाइम पे हो सकती है। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप जब भी चलाना सीख रहे हो तो क्लियरली एल लेटर अच्छे खासे साइज में रेड कलर का पेंट करके आगे की विंडशील्ड पे और पीछे के ग्लास पे आप उसको स्टिक कर दे, ताकि जो भी लोग हैं आसपास उनको पता रहे कि द पर्सन ड्राइविंग द कार इज लर्निंग। तो वो आपसे अपने आप ही सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और आप भी जब भी रोड पे ड्राइव करो तो लोगों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो। फोकस ऑन स्लो ड्राइविंग एंड the next tip is that please practice 2 hours early in the morning, either from 5 to 7 or 6 to 8, and also practice at night or in the evening when it's almost dark from 7 to 8, such that you can master how to drive at night also. So these are the basic pro tips which are going to come to your help and which will help you to become a pro driver for sure. 100% गारंटी, बट यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है कि मुझे ये चीज आ जाएगी और मुझे ये चीज सीखना ही है, और मुझे नहीं आएगी तो किसको आएगी। सब लोग चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। इसमें कोई भी चीज टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस एसोसिएटेड नहीं है। दिमाग लगाना है, हाथ पैर सही चलाना है, फोकस करके रोड पे, और you will be able to drive well. These are the pro tips which I wanted to give you. Motivate yourself, believe in yourself, get out of your comfort zone and practice, practice and practice enough such that you master this art of driving. So this is it for today's video. And I'll see you in my next video with some traffic rules and signals. In case you want me to make a video on any particular topic, please post that in the comment section. Post your queries as well. And I'll see you in my next video. Till then, if you haven't subscribed to my channel, then please make sure to subscribe and please do not forget to hit the bell icon to be notified any further. And stay tuned, keep watching, keep smiling. Bye-bye. Take care.